Hey guys, good evening. Welcome back to the channel. Hope everyone is doing great and preparing well for the boards. So, this video is for class 12th account students. So, we were discussing the question answers of partnership fundamentals, chapter 1 of partnership accounting. So, question number 1 to 64 we have discussed in the previous videos, and in today's video we are going to discuss question number 65, right? So these questions are from DK Goel 2025 book. So let's read the statement first of all. A and B are partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 2:3. So two partners we have here and their PSR is 2:3. The following was the balance sheet of the firm as on 31/3/24, राइट? ये डेट जो ईयर है आप रेक्टिफाई कर लोगे. Year is 24, right? So balance sheet they have provided. On the liability side, the capitals of A and B are given, that is 4,90,000 and 3 lakh. Total we have 7,90,000, and assets we have sundry assets of 7,90,000. So what they are saying next, let's read. Profit of rupees 2 lakh for the year ended 31/3/2024, right? Were divided between the partners without allowing interest on capital at the rate of 6% per annum and without charging IOD at the rate of 10% per annum, and salary to be 5,000 per month, right? We have divided, the firm had divided the profits among the partners in their PSR, and the profits are of 2 lakh, and they have not allowed the IOC, and they have not charged IOD, right? And even if they have not provided salary to be, this is salary per month, we'll convert this salary into an yearly salary by multiplying it with 12, right? So 5,000 into 12, it will become 60,000 per annum, right? And during the year, A withdrew 40,000 and B withdrew 20,000. And they have provided their drawings as well. A's drawings are 40,000 and B's drawings are 20,000, right? Pass the necessary adjustment journal entry and show your working clearly. What they are asking for, they are saying that we need to pass an adjustment journal entry here, and also we are required to show the working notes clearly. Hope everyone understood the statement very well. So now we are moving towards the solution, right? So let's open a blank page. So first of all, the capitals are closing capitals, because the capitals of balance sheet are closing capitals, right? So they have provided us the closing capital, and from that capital we need to calculate the opening capital, right? So write working note number 1. Here you will write calculation of opening capital and IOC. Okay, right? IOC rate they have given, and we need to calculate IOC as well here. So first of all, we'll write the closing capitals. Closing capitals A and B. So A's closing capital we have 4,90,000 and B's capital we have 3 lakh. Okay. And what's the formula? To calculate the opening capital from the closing capital, we need to add drawings here and deduct profit, right? So addition of drawings and deduction of profit is required for calculation of opening capital. So drawings we have 40,000
40,000 जो ड्राइंग है ए ने की है एंड 20,000 ड्राइंग बी ने की है, राइट? एंड प्रॉफिट्स वी नीड टू कैलकुलेट. They have given us the total profit that is of 2 lakh. So we'll calculate the share accordingly, and their PSR we have 2:3, right? So here you can write the working note number 2. 2 lakh into 2 by 5 and 2 lakh into 3 by 5. By calculating this, we'll get 80,000 for A and 1,20,000 for B. So let's write that is 80,000 and 1,20,000. You will write in the bracket because हम deduct कर रहे हैं, right? So 4,90,000 plus 40,000 minus 80,000 will get 4,50,000, right? And 3 lakh plus 20,000 minus 1,20,000, we are getting here 2 lakh. Okay, we have calculated opening capital. Now we need to calculate IOC. So rate of IOC is yeah, right, 6%. So interest on capital ka rate they have provided 6%. So 4,50,000 into 6 by 100, you are getting 27,000. If you want, we can see the working as well. So let's see, 4,50,000 into 6 by 100 and 2 lakh into 6 by 100. So here we are getting 27,000. This is calculation of IOC, working note number 3. Okay, 2 lakh into 6 by 100, that is 12,000, right? So 27,000 and 12,000. So this note is working note is complete. We have calculated sorry, we have calculated opening capital 4,50,000 for A and 2 lakh for B, and accordingly we have calculated interest on capital also, right, at the rate of 6%. That is 27,000 for A and 12,000 for B. Now we need to calculate IOD. पहले हम सारे वर्किंग नोट्स बना लेते हैं कि जो जो हमें टेबल में चाहिए, राइट? सॉरी. तो आईओसी हमें चाहिए था, टेबल में प्रोवाइड करना है हमने, दैट वी हैव कैलकुलेटेड, राइट? नाउ हमें आईओडी कैलकुलेट करना पड़ेगा. सो हियर यू कैन राइट द कैलकुलेशन ऑफ आईओडी. you'll put the working note accordingly. थर्ड है, फोर्थ है. तो आईओडी की कैलकुलेशन करेंगे क्योंकि ये भी हमें जो है फर्म ने चार्ज करना है. दिस element is also required in the table, so that's why we need to calculate IOD here. तो A के लिए IOD and B के लिए IOD calculate करेंगे. A's drawings are 40,000. The formula, as you are very smart guys, you know that IOD is equal to total drawings into rate by 100 into average period by 12. Okay, so 40,000 rate of IOD is 10%. Okay, 10%, and B's drawings are 20,000 and rate is 10%. Because the date is not provided here, that की drawings जो है कब की गई हैं during the year. तो हम क्या करेंगे, average period 6 months लेने वाले हैं. When date is not mentioned, always you take 6 months as an average period, right? So accordingly अगर आप calculate करते हो, you will get 2,000 IOD for A and 1,000 IOD for B. Okay, तो हमें क्या बोला गया है कि हमने IOC देना है, राइट? वो हमने कैलकुलेट कर लिया, दिस वन. एंड IOD हमें चार्ज करना है, यानी कि फर्म को चार्ज करना है, वो भी हमने कैलकुलेट कर लिया. ओके, डन. एंड द थर्ड थिंग इज सैलरी. कि सी को सॉरी बी को जो सैलरी है वो भी नहीं गिवन है, नहीं प्रोवाइड की गई है. तो बी की सैलरी भी हम यहाँ पे एक देख लेते हैं कि जो बी को सैलरी है वो कितनी देनी है, कितनी हमने क्रेडिट करनी है. तो 5,000
इंटू 12 दैट इज 60,000। तो ये तीनों चीजें हमारे पास आ गई हैं जो कि हमने टेबल में यूज करना है, राइट। सो लेट्स ड्रॉ अ टेबल। तो आप एक अच्छा सा टेबल का फॉर्मेट बना लोगे। ऊपर आप लिख दोगे table showing the adjustments. So two partners we have. Okay. एक आप एक एक डेबिट क्रेडिट का कॉलम भी बना लोगे, राइट। तो ये विद इन सेकेंड्स अ टेबल इज रेडी। तो ऊपर आप लिख लोगे टेबल शोइंग एडजस्टमेंट्स, राइट। तो दिस इज योर कॉलम ऑफ particulars and this is for A, B and this is for firm total. Okay. तो नाउ वी नीड टू प्रोवाइड आईओसी। तो आईओसी जो है हम देने वाले हैं, जस्ट 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 ओके। तो आईओसी, आईओसी हम क्या करते हैं, आईओसी क्रेडिट किया जाता है, राइट। तो आप ब्रैकेट में थोड़ा शो भी कर दोगे कि आप डेबिट कर रहे हो या क्रेडिट कर रहे हो, अदरवाइज यहाँ तो हमने लिखा ही हुआ है ऊपर, राइट। तो आईओसी एज वी हैव कैलकुलेटेड, हम जो है क्रेडिट करने वाले हैं 27,000 एंड बी के लिए हमने कैलकुलेट किया था 12,000। टोटल हो जाता है इनका 39,000, जो कि फर्म के लिए एक खर्चा बन गया, एक लॉस बन गया 39,000, राइट। सैलरी, सैलरी भी हमको क्रेडिट करना है। तो लेट्स राइट सैलरी, सैलरी टू बी क्रेडिटेड। सैलरी कितनी क्रेडिट करनी है, सिर्फ और सिर्फ बी को क्रेडिट करोगे आप सैलरी 60,000। तो ये 60,000 का फिर से लॉस क्रिएट हो गया फर्म के लिए। ओके। अभी हमको ये क्योंकि दो चीजें हो गई क्रेडिट की, तो हम पहले इसका टोटल देख लेते हैं, फिर हम देख लेंगे कि क्या डेबिट करना है, ठीक है। ओके। तो एक लाइन लगाएंगे हम कि कितना टोटल जो है हम क्रेडिट करने वाले हैं। तो हेयर 27,000, हेयर 60 प्लस 12 दैट इज 72,000 एंड 39 प्लस 60 दैट इज 99,000 आ जाता है हमारे लॉस के कॉलम में, राइट। अभी हमको ये अमाउंट हमने निकाल लिया, टोटल अमाउंट यहाँ पे आप लिख दोगे टोटल अमाउंट टू बी क्रेडिटेड, राइट। तो ये हमने क्रेडिट करना है। अब हम जो है अपना डेबिट वाला आइटम लिखेंगे कि डेबिट क्या करना है, आईओडी इज टू बी डेबिटेड। तो डेबिट कर दोगे आईओडी। आईओडी हमने कैलकुलेट किया 2,000 फॉर ए एंड 1,000 फॉर बी। तो ये हमारा क्या बन जाता है, ये फर्म का एक इनकम बन जाती है, राइट। अगर फर्म चार्ज कर रही है तो वो फर्म की इनकम बन जाती है। तो अभी हमें नेट अमाउंट निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये जो है कॉलम ये है हमारा टोटल जो है हमने पार्टनर को क्रेडिट करना है, और ये वाला जो आईओडी की लाइन है ये हमने टोटल क्या करना है, टू बी डेबिटेड। तो अभी हम नेट अमाउंट निकालेंगे कि नेट अमाउंट जो है हमें कितना डेबिट या क्रेडिट करना है। नेट अमाउंट टू बी, टू बी डेबिटेड और क्रेडिटेड, डेबिटेड और क्रेडिटेड हम कितना करने वाले हैं। नाउ लेट्स सी कि हमारे पास 27,000 जो है क्रेडिट में है, 2,000 हमारे पास डेबिट में है, तो 25,000 जो है हमारा क्रेडिट का बैलेंस निकल के आ रहा है, राइट। एंड दिस इज जस्ट लेट मी चेक, 72,000 जो है क्रेडिट में है एंड डेबिट में है हमारे पास 1,000। तो यहाँ भी हमारे पास क्रेडिट का 71,000 निकल के आ रहा है, राइट। और 99,000 हमारे पास डेबिट में है एंड 3,000 हमारे पास क्रेडिट में है। तो 96,000 का डेबिट बैलेंस निकल के आया हमारे पास। एज वी कैन सी जो फर्म का कॉलम है अभी उसमें बैलेंस जो है पड़ा है वो हमें नील नहीं दिख रहा है। तो उसको नील करने के लिए ये जो फर्म का लॉस है इसको हम जो है डिवाइड कर देंगे, इसका डिवीजन कर देंगे, राइट। तो इसके डिवीजन के लिए हम क्या लिखेंगे, डिवीजन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, यानी कि जो लॉस है हमारा 96,000 का इन देयर पीएसआर। तो पीएसआर उनका है 2:3, राइट। 2:3 में हम इस लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो लेट्स चेक
ये कितना बन जाता है हमारा? 96,000 इंटू 2/5 एंड 96,000 इंटू 3/5, ए के लिए और बी के लिए। तो ये अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आपको मिलेगा 38,400 एंड 57,600, राइट। तो इसको हम टेबल में प्रोवाइड करने वाले हैं। तो डेबिट में लिखेंगे 38,400, इसको लॉस दिया तो डेबिट में लिखोगे, एंड 57,600 डेबिट में, और 96,000 हमारा इनका टोटल आ जाएगा क्रेडिट में। तो एज वी कैन सी, फाइनली जो फर्म का कॉलम है वो निल हो चुका है, राइट। तो बस अब इनका हम जो पार्टनर्स हैं इनका जो नेट इफेक्ट है वो देख लेंगे कि नेट जो इनको कितना कितने से हम इसका एडजस्टमेंट एंट्री करने वाले हैं, राइट। तो नेट अमाउंट, राइट, नेट इफेक्ट, सॉरी नेट इफेक्ट लिख दोगे आप यहाँ पे, नॉट अमाउंट। नेट इफेक्ट क्या आने वाला है? 25,000 क्रेडिट में है, डेबिट में है 38,400। तो एज वी कैन सी डेबिट का जो कॉलम है दैट इज बिगर बाय 13,400, तो इसको आप लिख दोगे डेबिट बैलेंस। नाउ चेक ऑफ बी का चेक करते हैं। 71,000 क्रेडिट में है और 57,600 डेबिट में है। तो एज वी कैन सी क्रेडिट इज बिगर बाय 13,400। तो क्रेडिट का जो है बिग है कॉलम, राइट। तो एज वी कैन सी 13,400 हमारे पास डेबिट में है एंड 13,400 ही क्रेडिट में है। इट मीन्स दैट टेबल इज एक्यूरेट। सो द फाइनल स्टेप इज टू पास द जर्नल एंट्री। तो यहाँ हम देख लेते हैं कि कौन डेबिट हो रहा है। तो ए इज गोइंग टू बी डेबिटेड एंड बी जो है वो क्रेडिट हो रहा है यहाँ पे। सो लेट्स पास द जर्नल एंट्री फाइनली। तो एज कैपिटल अकाउंट, डेट अगर गिवन है तो आप यहाँ पे मेंशन कर दोगे, राइट। एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल अकाउंट, राइट। अमाउंट वी हैव 13,400 एंड 13,400। तो नरेशन क्या देने वाले हो? बीइंग एन एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट, राइट। होप ये आपको जर्नल एंट्री भी क्लियर है और ये वर्किंग भी आपको क्लियर है, सारी की सारी, और टेबल भी आपको क्लियर है। तो मीटिंग यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन स्टे ट्यून्ड, टेक केयर, गुड बाय एंड थैंक यू सो मच।